Good morning, children. How do you do? Fine? Good. So be safe and healthy at home. Okay? Yeah. So this is a poem 2. ठीक है, poem 2 है and notebook CW में लिखना है ना notebook and I'll explain you also. Okay? So before that, how to write a notebook? सो पहले आपको डेट लिखना है. मैंने बोला था ना वेन एवर यू स्टार्ट आपको डेट लिखना है. राइट साइड कॉर्नर राइट द डेट. देन टॉप मार्जिन रेड मार्जिन विल बी नो टॉप ऊपर रेड मार्जिन है ना तो वहाँ आपको पोम 2 ऐसा लिखना है. टच दी रेड टॉप मार्जिन टच करना है. सो टॉप ऑफ दी ऊपर लिखना है नीचे नहीं. मार्जिन के नीचे नहीं लिखना है ऊपर लिखना है. पोम 2 ऐसा ऊपर लिखना है मार्जिन का ऊपर. टच दी मार्जिन एंड राइट पोम 2. देन मार्जिन का नीचे आपको ये टाइटल लिखना है रेन एंड समर. ठीक. दैट रेड कलर मार्जिन इज दैट नो टॉप मार्जिन. डाउन टू टॉप मार्जिन आपको ये लिखना है टाइटल रेन एंड समर. ओके या क्लियर. हाँ देन पहले मैंने बताया था I have said you how to write everything but even in this video also I am sharing you. ठीक है I am sharing to you. So don't forget write neatly and correctly. So black pen you should be used for question and blue pen for answer. क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन में लिखना है और आंसर ब्लू पेन में लिखना है. डोंट फॉरगेट. देन दिस न्यू वर्ड्स है ना तो यू शुड लीव वन लाइन एंड यू शुड राइट दिस न्यू वर्ड्स. ठीक. दिस इज वेरी फेमिलियर नो. मैंने बताया था ना इन रिकॉर्डिंग ऑफ पोम while teaching the poem मैंने बताया था you have to mug up the new words. If you remember, if you memorize 2-3 times if you watch automatically it will be in your memory. तो 2-3 बार मैंने देखने के लिए बोला था वीडियो वॉच करने के लिए बोला था 2-3 टाइम्स सो दैट दिस न्यू वर्ड्स विल बी फेमिलियर फॉर यू बोला था ना. हाँ तो सी फर्स्ट डिविजन न्यू वर्ड्स. फायरी याद में है क्या. फायरी वेरी हॉट लाइक फायर मैंने बोला था ना वेरी हॉट. यस तो व्हाट वेरी हॉट व्हाट वाज हॉट समर. ओके समर इट इज वेरी हॉट लाइक अ फायर. क्लैटर्स याद है क्लैटर्स क्या बोला था इन न्यू वर्ड्स. साउंड बोला था ना नॉइस लाउड साउंड क्लैटर्स. वाइल इट रेन्स huge sound will come no. हाँ बारिश when बारिश comes no rain comes huge sound more sound occurs. ट्रम्प ऑफ hooves बोला था ना ट्रम्प ऑफ hooves. सो ट्रम्प मतलब नो walk with sound heavy noise. who will walk with heavy noise sound. मैंने क्या बोला था एक एनिमल का नाम बोला था ना. what is it do you remember. horse. foot of horse how it will walk the sound will come no will come or not. मैंने बोला था ना टक 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 वैसे साउंड विल कम नो व्हेन हॉर्स रन्स. हाँ तो इन द विंडो पैन्स व्हेन इट रेन्स द साउंड कम्स टक 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 साउंड कम्स लाइक अ हॉर्स इन द विंडो बताया था ना. हाँ तो नेक्स्ट इज गशस मतलब फ्लो suddenly flows no with force. ठीक है with force. so what suddenly flows about what we are talking in this poem rain. हाँ तो rain flows suddenly quickly immediately बोला था ना. हाँ तो फिफ्थ वन इज spout मतलब वेरी इजी. स्पाउट बोला था ट्यूब लाइक ओपनिंग बोला था ना ट्यूब लाइक ट्यूब पाइप लाइक ओपनिंग वेर वाटर फ्लोज. ठीक है ट्यूब इन अ पाइप वाटर फ्लोज दैट बताया था ना. हाँ तो ये आपको याद में रखना है ऑलरेडी मैंने बोला था. सो इफ द वीडियो यू हैव वॉच्ड फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 यू हैव वॉच्ड मतलब दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू.
But if you didn't watch, that means you have to watch this at least 2-3 times. Mug up it, keep in memory. It is very easy. Okay, so the final sixth one is gutter. क्या है? gutter. gutter मतलब the same thing मैंने बोला था ना, an open pipe. Okay, open pipe in the edge of that building, edge of the building, roof will be there, no, that edge of the roof, open pipe will be there. For what purpose? To carry this rainwaters, to carry rainwater, to carry down, ठीक है, नीचे, to carry down this rainwaters, gutters will be there, gutter, ठीक है, a pipe like only a open pipe, ठीक है, tube. Clear? The same thing I have explained here, that only words are explained here, meanings are also explained. Same thing now मैंने explain किया था ना, same है. See, new words and its meanings. Fiery, very hot like fire, very hot like fire. Clatters, makes a loud harsh noise, harsh noise. Trump of hoofs, the sound that horses hooves make, ठीक है, यहाँ already it is in a plural, that's why after yes apostrophes are there, ठीक है, apostrophe is there. Okay, gushes, flows out suddenly and with a great force. ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, इसलिए अभी मैं रीड कर रही हूँ. ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट रीड कर रही हूँ, ठीक है. साउट, स्पाउट, शिट, स्पाउट, ठीक है, स्पाउट. स्पाउट मतलब a tube like opening through which the liquid can be poured out. ट्यूब लाइक ओपनिंग, ठीक है, यहाँ लिक्विड इन द सेंस रेन. गटर, and same thing this also, see, an open pipe at the edge of the roof that collects and carries away rainwater, ठीक है, which carries the rainwater. So tube only, open pipe only, this is also. Got it? तो very easy, लेकिन 2-3 times if you read मतलब sure you can understand, and it will be mug up also for you. You can easily mug up it, you can easily keep in your memory, ठीक है. देन ये मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन आपको ब्लैक में लिखना है एंड आंसर आपको ब्लू पेन में लिखना है. आफ्टर 1-1 डिविजन 2 लाइन्स यू हैव टू लीव, 2 लाइन्स छोड़ना है, ठीक है. देन स्टार्ट थर्ड डिविजन, आंसर इन शॉर्ट. दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी. सी, हाउ डज द रेन साउंड ऑन द रूफ. रूफ मैंने बोला था ना, टॉप लेयर ऑफ द हाउस. रूफ मतलब टॉप लेयर ऑफ द हाउस, रूफ है, ठीक है. तो हाउ डज द रेन साउंड ऑन द रूफ. द रेन साउंड्स लाइक अ ट्रम्पिंग ऑफ हॉर्सेस roofs hoofs, horses hoofs when it falls on the roof, ठीक है. सी, ट्रम्पिंग ऑफ हॉर्सेस मैंने बोला था ना, हॉर्सेस हूफ्स, तो दैट ह्यूज साउंड, टप 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 while running horse make, no, yeah, so that heavy sound it makes, what makes, rain makes, बारिश, ठीक है, rain makes when it falls on the roof, टॉप लेयर ऑफ द हाउस. ईजी है ना? हाँ, बहुत ईजी, वेरी वेरी ईजी. लेकिन 2-3 टाइम्स आपको रीड करना है, वीडियो वॉच करना है, सो दैट इट विल बी ईजी, ठीक. सी सेकेंड वन, हाउ डज द रेन कम आउट ऑफ द spout. Okay, spout. How does it come out? The rain gushes and struggles out of the spout. तो गशेस मैंने बोला था ना, तो इन दैट पाइप इट ना गशेस मतलब ओवर फ्लो आउट सडनली, सडनली इट फ्लोज आउट. गशेस मतलब सडनली इट फ्लोज आउट विथ ग्रेट फोर्स. तो व्हेन इट कम्स विथ ग्रेट फोर्स इट विल स्ट्रगल. Why it struggles together? Every water will come, no, but the water will come slowly, patiently, nahi na, it will come very force. So when it comes force through that pipe it will struggle, no, that's what, ठीक है. Gushes and struggles out, very easy. See, rain gushes and struggles out, easy है ना. तो आफ्टर ईच क्वेश्चन आंसर आपको एक लाइन छोड़ना है, देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन.
तो यहाँ leave one line, then go for the third one. What is the rain like in the gutter? Okay, तो what is the rain like in a gutter? Gutter मैंने बोला था ना, open pipe, like a pipe at the edge बोला था ना, so pipe, like a pipe or tube. तो what is rain like? See, the rain roars down the gutter like a river. Roars मतलब sound, it makes sound, huge sound, like a river. River sound comes now when river from river it flows. Okay, water flows like that, it force. That force sound comes, roars. ठीक है, roars. Understand? तो यहाँ answer is like a river. The rain roars down the gutter like a river. Okay, if 2-3 times you read, surely it is very easy, you can keep in memory. Okay, see the fourth one. Why is the rain welcome? Why we are welcoming the rain? Listen, the rain is welcome. ठीक है, the rain is welcome from the question because मैंने बोला था ना, if in question why comes, in answer because will come. See, the rain is welcome because it brings relief. Relief in the sense relax. Okay, because till that it was very hot, garmi, it was summer. So when the rain comes, we will feel relaxed, cool. We will feel, no, yeah. That's why, see, it brings relief after the dust and the heat of summer. So during the summer season, very hot wind will be there. Sometimes wind also will not be there. हवा भी नहीं आएगा. And so dust will be there, no? So yeah. So when it rains, we will feel relief. We will feel cool. We will feel relaxed. See again one point. It washes everything clean and cools. बोला था ना, it washes everything clean, so everything will be clean, and cools everything down. Cools everything down मतलब the earth, the surroundings, the wind, everything it will be cool, chill, है ना? So very easy. Got it? Understood? See again, once again let me read. The rain is welcome because it brings relief after the dust and the heat of summer. It washes everything clean and cools everything down. Easy है ना? So very easy. And see, long answer only one है. ठीक है, एक ही long answer है. See fourth revision, तो आपको यहाँ 2 lines you have to leave. Okay, then start the next revision, fourth revision, answer in long. Start करना है. See the first one. Simple. What are the different words that the speaker used to describe the rain and its movement? ठीक है, तो what are the words? क्या words use किया है for the rain to describe, to state, to say about the rain and its movement? List out 5 words that you would associate with rain. So with rain, some words will be linked, no? Here it is in the poem it is used. तो आपको 5 words use करना है, list करना है, लिखना है. See, let us go for the answer. At first, the speaker talks about the rain as beautiful. बहुत सुंदर है, we will say, no? बहुत beautiful. So it was very beautiful. See, at first the speaker talks about the rain as beautiful. The sound of the rain is referred to as clatter. Okay, तो sound of the rain मैंने बोला था ना, how it is clatter मतलब यहाँ आपको बोलना है. ठीक है, because मैंने बोला था to memorize, मेमोरी करने के लिए बोला था, तो इसलिए आपको यहाँ आंसर करना है. You should not blink that don't know. See, clutter मैंने क्या बोला? Makes a loud, harsh sound. Okay, harsh sound, loud sound. तो rain, बारिश. Okay, rain makes referred. See, the sound of the rain is referred to as sound, harsh sound. Clutter मतलब harsh sound or huge sound. RUGE, huge sound also you can write.
or harsh sound also you can write. Okay, sound or noise also in your book, noise is given, noise also you can write, both the same. Okay, when the speaker talks about the movement, तो यहाँ movement, when he talks about the movement, he uses words like, क्या words use करें? See, gushes बोला था ना, gushes, pores and pores, swift, okay, swift, wide, swift and wide, okay, and roar. तो gushes मतलब क्या बोला? that pipe मैंने बोला था ना, open pipe at the edge of roof. Okay, it collects the water and carries down the rain water. बोला था ना, pipe like, tube like. हाँ, तो gushes. Pores and pores मतलब water is flowing. ठीक है, pores मतलब flow, FLOW. While teaching the poem मैंने बोला था pores मतलब flow, FLOW, flow. So water flows, pores and pores. Swift and wide, तो swift and wide मतलब quickly बोला था ना, swift मतलब quickly, जल्दी, immediately बोला था ना, quickly, जल्दी, immediately. Swift and wide, wide मतलब to the full extent, fully, okay, forcefully. ठीक है, what मैम fully मतलब water flows forcefully, quickly. It won't come slowly. Whether water will come? नहीं, with force, fully. And roars, and roar, and roar मतलब that sound, full deep sound it will make. Okay, sound. Roar मतलब it makes the sound, full deep sound. When water flows, no, full deep sound. Is easy है ना? So very easy, only 2.5 lines. See, at first the speaker talks about the rain as beautiful. The sound of the rain is referred to as clatter. When the speaker talks about the movement, he uses words like gushes, pores and pores, swift and wide, and at last क्या है? Roar. ठीक है, roar. So it is very simple and easy, है ना? Yes, so please go through this. That's all, finish. तो you have to watch the video. ठीक है, at least 2-3 times आपको watch करना है, so that it will be easily you can memorize, you can remember. Okay, yeah, then that's it. Thank you, bye bye, be safe at home. Okay, handwriting should be neat. Kindly write neatly or else again I will ask you to write second time. ठीक है, handwriting neat नहीं है तो मतलब again I will ask you to write. So write neatly, leave one line and write. Leave some space and write. Like ABCD, don't write. Leave some space and write. Okay. Thank you. Bye bye.